Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. Each word is divided into two parts with the help of apostrophe symbol. So we need to stress on the word before the apostrophe for correct pronunciation. So here are the next set of 25 words. First word is bond. A connection linking individuals or groups, a formal written agreement. बॉन्ड को हम हिंदी में बंधन कहते हैं, उर्दू में रिश्ता, जंजीर, तेलुगु में बंधमु. For example, the strong bond between the siblings was evident in their unwavering support for each other. Next word is boom. A deep resonant sound, a period of great prosperity or rapid economic growth. बूम को हम हिंदी में गड़बड़ाहट कहते हैं, उर्दू में तरक्की, तेलुगु में बूमू. For example, the thunderous boom of fireworks filled the night sky on New Year's Eve. Next word is boorish. Rough and bad-mannered coarse. बोरिश को हम हिंदी में बद्दा कहते हैं, उर्दू में बेअदब, बदतमीज़, तेलुगु में कर्कश महीना. For example, his boorish behavior at the formal dinner offended many guests. Next word is boost. To assist or encourage the increase or improvement of something. बूस्ट को हम हिंदी में बढ़ावा कहते हैं, उर्दू में बढ़ोतरी, तेलुगु में पेंचू. For example, the new marketing campaign helped boost sales for the company. Next word is booze. Alcoholic beverages, especially when consumed in excess. बूज को हम हिंदी में शराब पीना कहते हैं, उर्दू में शराब पीना, तेलुगु में मध्यम. For example, after a stressful week, he decided to relax with some friends and a bit of booze. Next word is boredom. The state of being bored, feeling uninterested or dissatisfied due to lack of excitement. बोर्डम को हम हिंदी में उबासी कहते हैं, उर्दू में बोरियत, तेलुगु में आकस्मिक महीना. For example, the long flights often lead to boredom unless there is something to do. Next word is boring. Not interesting or exciting, causing weariness. Boring को हम हिंदी में उबाऊ कहते हैं, उर्दू में बोरियत, तेलुगु में निराशकरमैना. For example, the lecture was so boring that many students struggled to stay awake. Next word is borrow. To take and use something belonging to someone else with the intention of returning it. Borrow को हम हिंदी में उधार लेना कहते हैं, उर्दू में उधार लेना, तेलुगु में पुंदू. For example, can I borrow your pen for a moment to jot down a note? Next word is bottleneck. A point of congestion or obstruction that slows down the overall process. Bottleneck को हम हिंदी में रास्ते का संकीर्ण भाग कहते हैं, उर्दू में तंग जगह, तेलुगु में अड्डंकी. For example, the narrow bridge became a bottleneck during rush hours. Next word is bottom. The lowest point or part, the underside. Bottom को हम हिंदी में नीचे कहते हैं, उर्दू में नीचे, बुनियाद, तेलुगु में किंदा. For example, the treasure chest was hidden at the bottom of the ocean. Next word is bounce. To spring back after hitting a surface, to rebound. बाउंस को हम हिंदी में छलांग कहते हैं, उर्दू में उछालना, छलांग, तेलुगु में बाउंस. For example, the ball bounced off the wall and rolled across the floor. Next word is bound. To leap or spring, to be tied or obliged by duty or commitment. बाउंड को हम हिंदी में कड़ी कहते हैं, उर्दू में बंधा हुआ, महदूद करना, तेलुगु में bound. For example, the athlete effortlessly bound over the hurdles on the track. Next word is bountiful. Generous in providing a large amount, abundant. Bountiful को हम हिंदी में प्रचुर कहते हैं, उर्दू में सखी, तेलुगु में औदार्यमयी. For example, the farmers' fields were bountiful, yielding a rich harvest. Next word is boutique. A small shop that sells stylish clothing, accessories or other fashionable items. बुटीक को हम हिंदी में बुटीक कहते हैं, उर्दू में कपड़ों की दुकान, तेलुगु में बुटीक. For example, she found a unique dress at a local boutique for a special occasion. Next word is bow.
To bend the upper part of the body forward as a gesture of respect or greeting. बाव को हम हिंदी में धन्यवाद कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, उर्दू में झुकना, तेलुगु में प्रणामम. For example, the performer took a bow after a successful musical performance. Next word is boycott. To refuse to buy, use or participate in something as a form of protest or disapproval. बॉयकॉट को हम हिंदी में बहिष्कृत करना कहते हैं, उर्दू में मुस्तरद करना, तेलुगु में बहिष्करणा. For example, the community decided to boycott the products of the company that violated ethical standards. Next word is brace. To make something stronger or more stable, a support or device to strengthen or hold in place. ब्रेस को हम हिंदी में सहारा देना कहते हैं, उर्दू में मजबूत करना, तेलुगु में कट्टू. For example, the architect used steel braces to reinforce the structure of the building. Next word is brainstorm. To generate creative ideas through a group of discussion or intense thinking. Brainstorm को हम हिंदी में मस्तिष्क चाट कहते हैं, उर्दू में जहन को उभारना, सोचना, तेलुगु में brainstorm. For example, the team gathered to brainstorm solutions to the challenging problems. Next word is brainwash. To manipulate someone's mind through intense persuasion or propaganda. ब्रेनवॉश को हम हिंदी में मस्तिष्क धुलाई कहते हैं, उर्दू में ख्यालात को बदलना, तेलुगु में ब्रेन वॉश. For example, the cult leader attempted to brainwash his followers with constant indoctrination. Next word is brave. Courageous, willing to face danger or difficulty without showing fear. ब्रेव को हम हिंदी में बहादुर कहते हैं, उर्दू में बहादुर, दिलेर, जानबाज, तेलुगु में धैर्यशीलమైన. For example, the firefighter showed brave determination while rescuing people from the burning building. Next word is bravo. Used to express approval or admiration for a performance. ब्रावो को हम हिंदी में ब्रावो कहते हैं, उर्दू में शबाश, तेलुगु में ब्रावो. For example, Bravo, the orchestra received a standing ovation for their outstanding concert. Next word is brawl. A noisy and chaotic fight involving a group of people. Brawl को हम हिंदी में हंगामा कहते हैं, उर्दू में झगड़ना, तेलुगु में अर्घ्यमाटा. For example, the bar erupted into a brawl after a heated argument between two patrons. Next word is breach. A violation or breaking of a law, agreement or code of conduct. ब्रीच को हम हिंदी में उल्लंघन कहते हैं, उर्दू में खिलाफ वर्जी, तेलुगु में उल्लंघनम. For example, the company was fined for the breach of environmental regulations. Next word is breakdown. The failure of a machine or system to function, a collapse of mental or emotional stability. ब्रेकडाउन को हम हिंदी में खराबी कहते हैं, उर्दू में खराबी, तेलुगु में अंशक्रिया. For example, the sudden breakdown of the car left them stranded on the highway. Next word is breakthrough. A significant development or achievement that removes obstacles or barriers. breakthrough को हम हिंदी में प्रबल प्रवेग कहते हैं, उर्दू में किसी मसले पर काबू पाना, तेलुगु में प्रबल प्रवर्तना. For example, the new technology represented a breakthrough in the field of renewable energy. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.